Hello, dear students. Good morning, all. I hope you all are very fine and good at home. So, let us continue with our lesson. So, now we will see actually how does a cyclone occur. Okay, how is the formation of cyclone? So, let us see. Now we have seen that the air which gets heated and which rises up, it brings the water droplets with it, right? So what happens before the cloud formation? Okay, that water droplet which are present in the cloud, so they will take the heat from atmosphere, they will absorb the heat from the atmosphere, and because of that heat they will be converted into water vapor. So they will be in the form of water vapor. And now when the time has come, which time of raining, and when the time of the raining has come, so that water vapors which were having the heat with them, they will release that heat into the atmosphere. So the heat is released into the atmosphere, and by releasing heat the vapor will get, of course the temperature of that vapor will decrease, and the vapor will get converted into the water, that is water droplets, and they will fall down. That is what is the rain, right? So this is how the raindrops will occur, and it will rain. Now the heat which is given by that water droplet, of course by that vapor, to the surrounding, so that heat which is released into the surrounding, that is taken by the air which is of course present in the surrounding. So that heat will warm the air which is present in the surrounding, and that warm air, of course being heated, being warm, it will become light and it will rise up, and by rising up it will produce a low pressure area, right? The air has risen up, so the area in that region, that is decreased. Now there is no air, right? There is no air because the air has risen up, so there will be a low pressure area created over there. You can see that a low pressure area is created. The air from both the side, or not from both the side, from all the four sides, that air will try to go up and creating a low pressure area, and hence more and more air will rush to the center of the storm. The air which is going, which is rising up, that causes a drop in the pressure, that means the pressure decreases, and more air will rush to the center of the storm, and this cycle gets repeated, and the change of events which will just make the air rise up, decreasing the pressure, and hence more air will come from the side, again it will rise up. So you can see in the diagram the air which is coming from the side, and that is rising up at a place. So in the same way this chain will occur, this event will occur again and again, with the formation of a very low pressure system with a very high speed winds revolving around it. The air from the side, it is coming and it is revolving around, and the low pressure area is generated in between, and this condition is only called as the cyclone. This condition is only called as the cyclone. Okay, and there are some factors which affect on the cyclone, that are the wind speed. What is the wind speed? What is the wind direction? What is the temperature, the humidity, and all, you know, all these factors. So on all these factors the cyclone will depend. Okay, that how what is the intensity of cyclone, that will depend on these factors. So let us see what is the structure of a cyclone. How is a cyclone, or how does it look like? So what happens, the cyclone, of course I said you can see it in the diagram, that the air which is rising up, and the other air which is from the which is coming all around, it is whirling in a circle, right? So the middle portion where there is a low pressure area, that is called as the storm. Okay, that is very calm, there is no air, so of course that area is very calm, and that is called as the IEYE, that is called eye of the cyclone, the center of cyclone. So the largest cyclone can be as much dangerous as because it can be 10 to 15 kilometer high. A large cyclone, that is
a violently rotating mass of air in the atmosphere. Of course the air rotates around the eye जो है सेंटर में होता है, और जो एयर है वो ऐसे साइड में पूरा वर्ल होती रहती है, गोल 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 ऐसे घूमती रहती है. सो दैट में गो अप टू 10 to 15 किलोमीटर हाई. ओके, सो द डायमीटर ऑफ, और जो डायमीटर है आई का डायमीटर, ओके, द डायमीटर ऑफ आई दैट में बी बिटवीन 10 to 35 किलोमीटर. just the diameter of eye, जो central area है low pressure area, only that the diameter of that is 10 to 35 kilometer, this much wide it is. and उसमें क्या होता है, that is the region of free of cloud, there will be no cloud, just वहाँ पे थोड़ी थोड़ी हल्की सी wind होगी, just it will have a light wind, आई रीजन. ओके, और फिर आई के अराउंड जो होगा, what will happen, there is a cloud region. ओके, देयर विल बी अ क्लाउड, ऐसे क्लाउड के जैसा पूरा रीजन होगा, क्योंकि एयर वहाँ पे ऐसे वॉल हो रही है अराउंड इट. दैट इज ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर इन साइज, सो इट इज़ दैट मच वाइड. एंड इन दिस रीजन देर आर हाई स्पीड विंड्स होंगी, थिक क्लाउड्स होंगे, और बहुत हैवी रेन होगी. ओके, सो अराउंड द आई देर विल बी द रीजन ऑफ हाई स्पीड विंड. स्पीड कितना होगा, 150 to 250 किलोमीटर पर आवर. देर विल बी थिक क्लाउड्स है, वहाँ पे हैवी रेन होगी. सो दिस इज़ हाउ अ साइक्लोन इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव. यू कैन सी द डिस्ट्रक्शन, विंड की स्पीड देखो कितनी है, उसका डायमीटर, एरिया कवर्ड बाय द साइक्लोन कितना है. सो ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव. एंड अवे फ्रॉम दिस रीजन अगेन विंड स्पीड फिर धीरे 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 कम होती जाएगी, क्योंकि जो प्रॉपर साइक्लोन है, जो इतनी ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर तक इतना उसका डायमीटर जाता है. एंड इफ़ यू गो अवे फ्रॉम दैट, देन विंड की जो स्पीड है वो धीरे 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 कम हो जाती है. एंड ऑफ कोर्स द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. सो ऑफ कोर्स द साइक्लोन विच इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, उसका डायमीटर इतना है, उसकी इंटेंसिटी इतनी होती है, दैट मच हाई स्पीड विंड इज़ ब्लोइंग, सो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव. सो लेट अस सी व्हाट आर द डिस्ट्रक्शंस caused by a cyclone. So a cyclone can be very destructive. Strong winds which push the water towards the shore. क्या होता है, साइक्लोन जब सी की तरफ से वो आता है, मरीन की तरफ से. सो व्हेन द साइक्लोन इज कमिंग फ्रॉम द सी, ऐसे सी के बीच में कहीं पे तो भी साइक्लोन डेवलप हुआ है. एंड इफ इट इज़ दैट इज कमिंग टूवर्ड्स द सी शोर, तो व्हेन इट इज़ when it is so many kilometers away, that time also वो वाटर को सी शोर की तरफ पुश करेगा, तो इतना ज़्यादा टाइड आता है. सो बाय दैट ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दैट द साइक्लोन इज गोइंग टू हिट द शोर, विच इज़ ऑफ कोर्स कमिंग फ्रॉम द सी साइड. ओके, so that is the first indication that the cyclone is approaching towards us. The water waves which are produced by the wind, they are so powerful कि person cannot withstand that, a person cannot overcome that. ठीक है, तो वो उसका स्पीड इतना ज़्यादा होता है. द लो प्रेशर इन द आई, जो आई का जो लो प्रेशर एरिया होता है, सो दैट लिफ्ट्स द वाटर इन द वाटर सरफेस इन द सेंटर. और क्या होता है, दैट आई जो है वाटर सरफेस, अगर आप देखोगे वाटर दैट विल राइज लाइक दिस, वी कैन सी द वाटर विच इज़ राइजिंग अप वैसे, विच इज़ वॉलिंग अराउंड दैट आई. एंड दिस राइजिंग वाटर जो है उसकी हाइट कितनी हो सकती है, इट कैन बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स. सो 3 to 12 मीटर्स हाई वो वाटर ऐसे ऊपर इट विल वर्ल अराउंड द आई, एंड इट अपीयर्स लाइक द वाटर की एक वॉल ही हमारी तरफ आ रही है. तो इतना पूरा वो डायमीटर भर के पूरा वाटर ऐसे गोल घूमेगा. वी फील दैट द वॉल ऑफ द वाटर इज ओनली कमिंग टूवर्ड्स द शोर, टूवर्ड द सी शोर फ्रॉम द साइड ऑफ द सी. As a result, the sea water it enters into the low-lying coastal area, और फिर it causes a lot of damage. Okay, it causes a lot of damage, it causes loss of life and also property, and it also reduces the fertility of soil. तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है ये साइक्लोन. देन फिर क्या होता है, कंटिन्यूसली क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है, राइट. सो देर इज़ continuously heavy rainfall, right. When the cyclone is coming, we have seen आई के आजू बाजू जो एयर वर्ल्ड होती है, there is continuous rainfall. So that brings continuous rainfall, and it may further again फिर रेनफॉल की वजह से, heavy rainfall की वजह से there might be flood condition. The high-speed winds which are accompanied a cyclone can damage the houses
it can damage the telephone lines, it can damage the trees, it can uproot the trees, it can damage the whole system. It can of course causes a tremendous loss to the life and the property. A cyclone is of course it is known by various names in various regions. So it is called as the hurricane in American continent. So the cyclone, same thing, that is called as hurricane in the American continent, and in Philippines and Japan it is called as the typhoon. So where it is very common in India also, cyclones are very common. The whole coastline of India it is vulnerable to cyclone. पूरे coastline में cyclone के chances होते हैं mostly. जो ईस्ट कोस्ट है वो ज़्यादा वल्नरेबल है. ईस्ट कोस्ट में साइक्लोन के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वेस्ट साइड. ओके, then next are the tornadoes. Now how are the tornadoes? See, you can see it in the diagram, right? The tornado, it is a very dark funnel shaped cloud. It is a cloud which reaches from sky to the ground. ये cloud जो है वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के, of course because of low pressure area जो उसके अंदर डेवलप होता है, तो दैट वॉल्स लाइक दिस इन अ सर्कल, और वो कहाँ से आता है, स्काई से ग्राउंड तक वो पूरा ऐसे कंटिन्यूसली फॉर्म में वी कैन सी अ टॉर्नेडो. मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज दे आर वीक. वायलेंट, अगर कुछ टॉर्नेडो वायलेंट है, सो दैट कैन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर्स पर आवर. सी द स्पीड इज सो हाई, 300 किलोमीटर्स पर आवर. सो इतनी स्पीड से टॉर्नेडो कैन मूव. टॉर्नेडोज में इट मे फॉर्म विद इन द साइक्लोन. साइक्लोन के बीच में भी कभी कभी वो जो आई होता है, देयर ऑल्सो टॉर्नेडोज में डेवलप, लेकिन इन आवर कंट्री इट इज़ नॉट दैट फ्रीक्वेंट. इन आवर कंट्री वी डू नॉट सी टॉर्नेडोज ऑफनली. टॉर्नेडो का जो क्लाउड्स है विच इज़ व्हर्लिंग, सो द डायमीटर ऑफ दैट कैन बी एज लेस एज 1 मीटर और इट कैन बी एज वाइड एज 1 किलोमीटर, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है. एंड द फनेल ऑफ द टॉर्नेडो क्या करता है, पूरा फनेल शेप्ड होता है वो. सो व्हाट इट टेक्स, इट सक्स ऑल द डस्ट डेब्रीज, ह्यूमन बींग को भी खींच लेके वो एवरीथिंग इट विल जस्ट टेक इनसाइड इट. ओके, उसके जो बेस की तरफ जो भी है वेयर देर इज़ लो प्रेशर एरिया, सो इट विल टेक एवरीथिंग विद इट एंड इट विल वॉल एवरीथिंग अराउंड इट, थ्रोज इट टू द टॉप. क्योंकि वो ऐसे फनल शेप में ऐसे वॉल हो रहा है, तो वो ह्यूमन बींग्स, फिर डस्ट डेब्रिस जो भी है, अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो इट कैन ऑल्सो टेक अ ह्यूमन बींग, और वो ऐसे ऊपर उसको लेके जाता है. सो इट इज़ दैट डिस्ट्रक्टिव. So basically what is the difference between, it looks same but actually there is a difference between a cyclone and a tornado. So what is the difference? A cyclone जो है it is a huge powerful storm होता है. A cyclone of course उसमें बीच में एक लो प्रेशर एरिया होता है और आजू बाजू में हाई प्रेशर एरिया है, बहुत हाई स्पीड विंड है विच इज़ गोइंग अराउंड द आई ऑफ द साइक्लोन, राइट. एंड ऑफ कोर्स उसकी डायमीटर्स बहुत ज़्यादा होती है. साइक्लोन की डायमीटर टॉर्नेडो से तो भी ज़्यादा होती है. और टॉर्नेडो इज ऑल्सो इट इज़ वायलेंट, इट इज़ ट्विस्टेड फनेल ऑफ कोर्स ऑफ अ हाई स्पीड विंड, और इट इज़ फॉर्म व्हेन अ फनेल लाइक कॉलम जो है, ऐसे फनेल के जैसे कॉलम जो क्लाउड से लेके तो ग्राउंड तक आता है. एंड वार्म एयर विल राइज अप, इससे क्या होगा, एक हाई स्पीड की जो विंड है वो ऐसे उसके अराउंड घूमते रहेगी. इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, बट साइक्लोन आर अकम्पनाइड विद द स्टॉर्म्स विद द रेन एंड ऑल, जो इसमें टॉर्नेडोज में नहीं होता है. देयर इज़ जस्ट विंड, ओके, क्लाउड होता है. एंड ऑफ कोर्स द टॉर्नेडोज दे हैव रिलेटिवली स्मॉलर डायमीटर एज कम्पेयर टू दी साइक्लोन्स. ओके, देन जब साइक्लोन्स आता है वी हैव टू टेक सम सेफ्टी मेजर्स. सो व्हाट आर द इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग साइक्लोन? दैट साइक्लोन जो है वो फोरकास्ट होता है कि साइक्लोन आने वाला है, वार्निंग्स दिए जाते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ कोर्स थ्रू वेरियस मीडिया. सो अ रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड जनरल पब्लिक को ये सब इंटीमेशन दिए जाते हैं कि द साइक्लोन इज़ गोइंग टू हिट द शोर, ओके, टू द सी शोर. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुछ साइक्लोन शेल्टर्स का कंस्ट्रक्शन होता है ऑफ कोर्स टू कीप द पीपल ओवर देयर इन सेफ एरिया. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होती है फॉर मूविंग द पीपल एज फास्ट एज पॉसिबल. तो दिस आर द थिंग्स विच वी हैव टू डू ड्यूरिंग और बिफोर द साइक्लोन हिट्स. देन एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल.
So what we have to do, what we the people have to do, so we should not ignore जो warnings हमको दी जा रही है about the cyclone or about the destruction caused by it. So we should not ignore that. We should be following the instructions given by the meteorological department through TVs, radios, newspapers से जो मिलता है. So we should not ignore those warnings, and we should make necessary arrangement to shift all the essential household goods जो है, domestic animals है, vehicles है, of course we have to shift it to the safer places, and we have to avoid driving on the road. तो अगर स्टैंडिंग वाटर है तो हमको ड्राइविंग अवॉइड करनी है, बिकॉज फ्लड की वजह से द रोड्स में हैव डैमेज्ड. एंड वी हैव टू कीप रेडी द फोन नंबर्स, जो इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स है, वी हैव टू कीप इट रेडी विद अस. एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू लाइक पुलिस के जो है, फायर ब्रिगेड, मेडिकल सेंटर्स एंड ऑल्सो दीज नंबर्स वी हैव टू कीप रेडी विद अस ड्यूरिंग अ साइक्लोन. There are some other precautions which we need to follow, that do not, we should not drink the water. cyclone के बाद जो flood आके जो चला गया है, we should not drink that water because that might be contaminated. दैट वाटर माइट बी कंटेमिनेटेड, क्योंकि बहुत सारा उस पर कुछ बह के आया होगा. सो वी शुड नॉट, ऑफ कोर्स नॉट ड्रिंक दैट वाटर. वी शुड नॉट टच एनी वेट स्विचेस एट एज इट मे कैरी द करंट, राइट. और जो फॉलन जो पावर लाइन्स है उसको टच नहीं करना है. डू नॉट जस्ट गो आउट फॉर द सेक ऑफ फन, देखे तो बाहर गए. सो वी शुड नॉट गो आउट, वी शुड बी इन साइड आवर हाउस, विल बी सेफ ओवर देयर. डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स जो होते हैं उनको कुछ भी डिमांड करके, डू नॉट प्रेशराइज देम, डू लेट देम डू देयर वर्क. देन कॉपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स, योर फ्रेंड्स, बिकॉज दैट इज ऑफ कोर्स ऑल आर सफरिंग फ्रॉम दैट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइक्लोन. नाउ साइक्लोन, और ये किसकी वजह से होता है, सब विंड स्पीड. मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, विंड स्पीड. इन थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन, एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द विंड स्पीड. सो वी हैव टू मेजर द विंड स्पीड. ये अपने इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, कई जगह पे लगा हुआ होता है. येस, दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनीमोमीटर. व्हाट इज़ दैट इंस्ट्रूमेंट, एनीमोमीटर, विच इज़ यूज्ड टू मेजर द विंड स्पीड. विंड की डायरेक्शन क्या है और उसकी स्पीड क्या है, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड इफ़ देयर इज़ एनी चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर. ओके, तो ऑफ कोर्स अभी आजकल, तो पहले तो कैसे होता था कि साइक्लोन आने वाला है या ऐसे कुछ डिज़ास्टर आने वाला है तो किसी को जल्दी पता नहीं चलता था, राइट. सो जस्ट जब वो दिख रहा है कि द टाइड्स आर मूविंग फास्टर, देन थोड़ा कुछ समझ में आता था. लेकिन नाउअडेज वी हैव ऑल दी सैटेलाइट्स, वी हैव द रडार्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हमको पता चल जाता है 48 आवर्स बिफोर वी कम टू नो दैट अ साइक्लोन इज़ गोइंग टू हिट और अ थंडरस्टॉर्म इज़ गोइंग टू हिट, या ऐसे कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आने वाला है. वी कम टू नो इट बिफोर ओनली. और इसीलिए फिर 24 आवर्स बिफोर ओनली वार्निंग साइंस आर इशूड. सो पब्लिक आर ऑफ कोर्स टेकन टू अ सेफ प्लेसेस. ओके, एंड द मैसेज इट ब्रॉडकास्ट एवरीवेयर, एवरी आवर, एवरी हाफ एन आवर मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट होता है टीवीज़ पे, रेडियोज़ पे वगैरह, नेट पे वगैरह. एंड ऑफ कोर्स सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिज़ास्टर. साइक्लोन आने के बाद जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो आजकल आपने देखा होगा सारी कंट्रीज़ मिल के दे हेल्प द कंट्रीज़ आउट जो जिसके यहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ है. So this is all about the wind storms and cyclone. I hope you have understood this lesson. Just be safe at your home. Goodbye.